सभी लोगों का इन्फिनिटी लर्न यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। किसका? चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने इसका लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है और आप सभी लोग जिन्होंने लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया था उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर बायोलॉजी या बॉटनी की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए और वहाँ आपको जो लेटेस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। लेक्चर 1 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे ज़रूर चेकआउट कीजिए। और वहाँ हमने क्या डिस्कस किया था? उस लेक्चर में मैंने आपको डीएनए के स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दिया था। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर की मोनोमरिक यूनिट्स कौन सी है और मोनोमरिक यूनिट्स जो डीएनए की हैं, राइट, वो भी उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं उनके अंदर। तो बहुत ही अच्छा, शानदार और बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन मैंने किया था डीएनए के स्ट्रक्चर पर पिछले लेक्चर में। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड चेक आउट दैट। चलिए आज के लेक्चर की बात करते हैं। आज हम लोगों को क्या सीखना है? लेट मी टेल यू माय लवली स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे डीएनए के एक बहुत ही फेमस मॉडल के बारे में। तो सुनिएगा ध्यान से। डीएनए का जो मॉडल है, जो बहुत ही फेमस और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, डीएनए का कौन सा मॉडल, किस तरीके का मॉडल? डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का मॉडल, राइट? सो अ वेरी फेमस मॉडल नोन एज डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग सीखेंगे कि ये जो मॉडल है डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, जिसका नाम क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल। ये एग्जैक्टली क्या है? इस मॉडल को कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया? प्रपोज करने के लिए कौन कौन से दूसरे साइंटिस्ट के वर्क की हेल्प ली गई? साथ साथ में हम ये भी समझेंगे कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, एज वेल एज व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, व्हाट आर द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल. Right? So I hope the objective of today's session is clear to all of you. So let us start the session, and before starting it I would love to tell you that I request you all to go and check out infinitylearn.com website, where we offer courses related to NEET and JEE. So I request you all to go and check out the infinitylearn.com website and see the courses that we offer there. And you can use all those courses at 40% off by applying the code Kiran40. So I request you all to go check out and use the courses at 40% off by applying the code Kiran40, KIRAN40. Next, another important information that I want to give you is, students, that at infinitylearn.com website we have recently started a new course targeting NEET 2022, right? So we have started a new batch, targeting NEET 2022, where 11th and 12th class syllabus will be covered in detail. You will get live classes, you will get assessment and doubt clearance. So I request you all, go and check out the amazing courses that we offer at Infinity Learn website. Right, students? So I hope you got the information that I am trying to convey here. Now let us start our session. Also, let me tell you, the last date to enroll yourself in this batch of NEET 2022 is 25th of November. So hurry up and make a decision, okay? So let us start the session. Yes. तो देखिए स्टूडेंट्स, डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए हमें डिस्कस करना है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, दिस स्ट्रक्चर और दिस मॉडल फॉर डीएनए स्ट्रक्चर, that is double helix model, was given by or was proposed by Watson and Crick, right? Another important thing that you need to understand is that this model
was proposed by these scientists, but their proposition was based on the work of other scientists as well. Yes, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वॉटसन, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था या प्रपोज किया था, इनका ये जो प्रोपोजिशन था, इनका ये जो मॉडल था, वो और दूसरे साइंटिस्ट के वर्क पे भी बेस्ड था, राइट. सो लेट अस सी द नेम्स एंड द वर्क ऑफ दोज प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जिनके ऊपर बेस्ड एक मॉडल दिया गया, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, राइट. सो द वेरी फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन. तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये वो दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरेज की मदद से डीएनए के मॉलिक्यूल का डिफ्रैक्शन करवाया. आई रिपीट माई सेल्फ स्टूडेंट्स, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए मॉलिक्यूल का एक्सरे की मदद से डिफ्रैक्शन करवाया और जो डेटा उन्हें मिला, उस डेटा का इस्तेमाल, दैट डेटा वाज यूटिलाइज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक टू प्रपोज दिस वेरी सिंपल बट फेमस model for the structure of DNA, that is the double helix model for DNA. Another important scientist, if I talk about, the name of the scientist is Erwin Chargoff, right. So Erwin Chargoff did study on the double stranded DNA molecule and gave certain observations. So again, this double helical model for DNA given by Watson and Crick was also based on the observations made by Erwin Chargoff. So these are the important scientists who contributed in directly or indirectly in proposing the very simple but famous model for the structure of DNA, that is double helix model. उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को यहाँ तक की बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. Let us see the next thing that we need to understand. Okay, so that was the history part of this model. Now let us try to understand the salient features, the properties, the characteristics of DNA according to this double helical model. Let us start with the very first one. According to this model, DNA consists of two polynucleotide chain, right. We have already done this discussion in the previous class that DNA is a long polymer. DNA is a polynucleotide chain. So remember, according to this model, DNA is made up of not one but two polynucleotide chain, and each polynucleotide chain is made up of a monomeric unit known as nucleotide, right. Known as deoxyribose nucleotide. I have done enough discussion on this term in my previous class. So all those who are unable to understand what does deoxyribose nucleotide mean, I request them to check out the previous lecture. I have done enough and very detailed discussion on this term. So these polynucleotide chain are made up of the monomeric unit known as deoxyribose nucleotide. Next, now we understood the very first point that DNA is not made up of one but two polynucleotide chain, as you can see in this diagram, right. So this is what? This is the one polynucleotide chain, और यहाँ देखो बच्चों ये क्या है, ये है आपकी दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. और ध्यान से देखिएगा इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, रिमेंबर, लिसन वेरी केयरफुली. गुड इवनिंग सुनील, वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास. चलिए साथ में सीखते हैं डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल क्या होता है. चलिए देखिएगा. सो inside polynucleotide chain, inside the two polynucleotide chain of DNA, if we talk about the backbone,
who is making the backbone of the polynucleotide chain? It is the phosphate. It is the phosphate group and sugar molecules. Which sugar molecules are present in DNA? Deoxyribose. Remember, what is deoxyribose sugar? Remember my lovely students, deoxyribose sugar वो होती है जिसमें sugar के second carbon पर एक oxygen कम होता है in comparison to ribose sugar. So, the backbone of the polynucleotide chain is made up of phosphate groups and sugar molecules. Whereas the nitrogen bases, which are the nitrogen bases that are present in a DNA molecule? Very simple, A, T, G and C, adenine, thymine, cytosine, guanine, right? So, A, T, G, C are the nitrogen bases. So, inside a polynucleotide chain, nitrogen bases projects outside, right? So, the backbone of the DNA molecule is made up of, or polynucleotide chain is made up of sugar and phosphate, whereas the nitrogen bases just projects outside from the polynucleotide chain, and that's exactly what I was trying to explain here. So, DNA consists of two polynucleotide chain where backbone of the polynucleotide chain or DNA is made up by sugar and phosphate molecules, and nitrogen bases inside a DNA projects, right. So, nitrogen bases projects inside the structure of DNA or between the two polynucleotide chain. Simple. Let us understand the second point. The second point is trying to say that, remember this very nicely students, if we talk about this structure, these two polynucleotide chain has anti-parallel polarity. Yes, these two polynucleotide chains of DNA runs anti-parallel to each other like this. This is what? Anti-parallel. This is what? Parallel. This is what? Parallel. But these two will run anti-parallel to each other. The direction of one polynucleotide chain will be 5:3 and another will be 3:5. But there is a point over here, a small trick that you need to remember. And what's the trick? You need to fix the direction. You will either walk from right to left or left to right in order to find out the polarity of the polynucleotide chain. You cannot change your direction for each and every chain or polynucleotide chain of DNA. If you do that, then you will not get this direction. So, fix it. Let us do it from left to right. So, walking from left to right, this one, walking from left to right, this polynucleotide chain has the polarity 5, is to 3. Now, again walking from left to right, this polynucleotide chain has the polarity 3 dash to 5 dash. Hence, both the chains of the DNA, both the polynucleotide chains of DNA are anti-parallel to each other. Are you getting this point? Tell me students, are you getting this point or not? Let me know. I would love to repeat for any one of you if you want that. Okay, now let us understand something more important. See here. See the structure of DNA. These are the two polynucleotide chain, and you can see here what? You can see here, by mistake a P has come. I would love to remove it. Even from here also I would love to remove it. Was it before that? No. Okay, fine, perfect. So, see here students, very nicely. So, what is this? These are what? A, T, G, C, these are the nitrogen bases. So, the nitrogen bases of the respective polynucleotide chains are bonded to each other with the help of hydrogen bonds. Yes. So, here this is what? This is the polynucleotide chain 1. It has these nitrogen bases. Polynucleotide chain 2. It has these nitrogen bases.
So nitrogen bases of this chain are bonded to the nitrogen bases of this polynucleotide chain with the help of hydrogen bonds. What are these my lovely students? मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान दो, ये जो bonds हैं वो हाइड्रोजन के हैं. किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं. So remember both the polynucleotide chain are connected to each other with the help of, remember, listen very carefully, I would love to repeat it. Inside a DNA molecule, both the polynucleotide chain are connected to each other with the help of hydrogen bonds which are formed between the nitrogen bases of the respective polynucleotide chain. And these hydrogen bonds formed between the nitrogen bases of the two polynucleotide chain actually gives stability, right? Actually makes this structure of DNA stable, actually holds these hydrogen bonds between the nitrogen bases of the two polynucleotide chain, makes or holds these two polynucleotide chains of DNA together. So these two polynucleotide chain of DNA are together or held together with the help of hydrogen bond, and also these hydrogen bond is giving stability to the structure of DNA. Please remember this point. I hope this much is clear to all of you. Now another fact that we need to understand together is adenine always and always pairs with thymine. I repeat myself, A always pairs with thymine. That's a fact. That's an observation. This observation was done considering all the living organisms, right? All the species of living organisms. So my lovely students, this is a universal law that you need to understand, a universal fact, rather I should say a universal fact, that is A will always bind with T with the help of two hydrogen bonds. G, guanine, will always bind with cytosine with the help of three hydrogen bonds. So A will always pair or bound with T and G always with C. So that is the observation, right? You need to remember. So A and T will be adenine and thymine nitrogen bases will be bond together with the help of two hydrogen bonds. That is why you can see two dash lines. G and C, guanine and cytosine, will be bond together with the help of three hydrogen bonds, and that is why you can see three dash lines. So here there are three hydrogen bonds and here two hydrogen bonds. Perfect. I hope this much is clear to all of you. Now let us see what is there on the slide. So same thing I have already explained you. So nitrogen bases of both the strand paired together or paired through hydrogen bonds. Second, A forms two hydrogen bonds with T. What is A? Adenine. What is T? Thymine. G forms three hydrogen bonds with C. What is G? Guanine. What is C? Cytosine. And vice versa, A will form with T and T will form with A, G will form with C and C will form with G, right? Pretty simple, right? See, next important thing and next important observation that you should understand is, if these two are the fact, then obviously the third is also a deduced fact. This fact can also be derived from the above two observation. How? You can see here. A is forming pair with T, G is forming pair with C. What is A? A and G are purines. T and C are pyrimidines. So always and always a purine like A, like G, pairs with pyrimidines like T, like C, right? So this is the third observation that you need to understand, which can be deduced from the above two observations. So because always A pairs with T, what is A? Purine. What is T? Pyrimidine. Because always G pairs with C, what is G? Purine. What is C? Pyrimidine. So hence we can say
purine always pairs with pyrimidine. Yes, and because of this fact that purine always pairs with pyrimidine, hence there is maintenance of uniform distance between the two polynucleotide chains of DNA. Why? Very simple. The reason is very simple, my lovely students. This question is even asked in your NCERT textbook. The answer is pretty simple. If you remember, what is purine? Purine, if you remember the structure, for all those who are unable to imagine the structure of purine and pyrimidine, again I request them to check out the previous lecture where I have actually not only gave the explanation but also showed you the structure of purine and pyrimidine. So, purines are double cyclic structure. So, purine contains 2 rings, right? 2 cycles. Talking about pyrimidine, they have single ring. So, purine are double ring structures, pyrimidine is or are single ring structure. So, when always purine will pairs with pyrimidine, there will always be 3 rings together. Purine, pyrimidine, 3 rings. Purine has 2 rings, pyrimidine has 1 ring. So, always there are 3 rings in one plane. Always there are 3 rings in one plane, and hence there is maintenance of uniform distance between the 2 polynucleotide chain of DNA. That is the fact. Now, to understand this, let us take a retrogressive approach. Although purine always pairs with pyrimidine, let us think opposite. Let us think opposite, which is not true, but let us try to do it so that you understand that how, because of pairing of purine with pyrimidine, there is a maintenance of proper constant and uniform distance between the 2 chains of DNA. So, imagine for example, if purine is pairing with purine and if pyrimidine is pairing with pyrimidine, then what will happen? At certain point of time when purine is pairing with purine, you will have 4 rings in one plane. When pyrimidine is pairing with pyrimidine, you will have just 2 rings in a plane. Imagine 4 rings in a plane, 2 rings in a plane, 4 rings in a plane, 2 rings in a plane. So, what is this? 4 ring, 2 ring, 4 ring, 2 ring. 4 rings means when purine is pairing with purine. 2 rings mean when pyrimidine is pairing with pyrimidine. So, imagine the distance will not be uniform between the 2 chains of polynucleotide chains of DNA. And hence, this is not seen in DNA, this is not the observation that was made by the scientist, and hence it was concluded that it is not that purine pairs with purine or pyrimidine pairs with pyrimidine. This is not the case. What's the case? Purine always pairs with pyrimidine, and hence there is a maintenance of uniform distance between the 2 polynucleotide chain of DNA. बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? बताइए, क्या आप लोगों को और समझना है और डिटेल में समझना है इसे? नहीं? चलिए अब कुछ और डिस्कशन हम करते हैं. देखना, अभी तक हमने क्या समझा? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों. अभी तक हमने समझा कि A pairs with T always and G pairs with C, right? ये हमने अभी तक सीखा, right? इसका क्या मतलब है? यानी कि जितने भी A होंगे एक DNA के मॉलिक्यूल में, inside one molecule of DNA, number of adenine nitrogen base will be equals to number of thymine nitrogen base. या फिर ऐसे भी तो कह सकते हैं number of nucleotides possessing adenine nitrogen base will be equal to number of nucleotides possessing thymine nitrogen base. Again, adenine equals to number of guanine will be equals to number of cytosine. तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं number of nucleotides possessing guanine as a nitrogen base will be equals to number of nucleotides possessing cytosine nitrogen base, right?
सो ये कंक्लूजन भी आप लोग याद ध्यान रखना, बिकॉज द क्वेश्चन सेटर और द पर्सन हु इज मेकिंग और सेटिंग द क्वेश्चन पेपर कैन प्ले विद द वर्ड्स, राइट. वो नाइट्रोजन बेसिस की टर्म्स में भी पूछ सकता है, आपको न्यूक्लियोटाइड्स की टर्म्स में भी पूछ सकता है. तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, इमेजिनेशन को शानदार रखिए. योर इमेजिनेशन शुड बी क्लियर. द पेपर सेटर वोंट बी एबल टू कंफ्यूज यू, राइट. चलिए अब देखना, because A pairs with T and G pairs with C, right? और एक और चीज अभी हमने सीखी, यहां देखो बच्चों, अभी हमने क्या सीखा इसमें कि प्यूरीन इज पेयरिंग विथ pyrimidine, प्यूरीन इज पेयरिंग विथ pyrimidine, hence we can say that purine equals to pyrimidine. That means total number of nucleotides. I repeat myself, ध्यान से सुनना. इस लाइन का क्या मतलब है? This line means total number of nucleotides possessing purine nitrogen bases. That means total number of nucleotides having adenine or guanine, as nitrogen base is equals to the total number of nucleotides possessing thymine और साइटोसाइन नाइट्रोजन बेसिस. और यही तो मतलब है प्यूरीन इक्वल्स टू pyrimidine का. और नेक्स्ट स्टेप में भी यही लिखा है, व्हेन प्यूरीन इक्वल्स टू pyrimidine दैट मींस A प्लस G इक्वल्स टू T प्लस C. बिकॉज A प्लस G क्या है? प्यूरीन ही तो है. टोटल नंबर ऑफ प्यूरीन नाइट्रोजन बेसिस इनसाइड अ DNA मॉलिक्यूल. So what is A plus G? A plus G means total number of purine nitrogen bases inside a DNA molecule. What is pyrimidine? T plus C. What is T plus C? Total number of pyrimidine nitrogen bases inside a DNA molecules is equal. So purine equals to pyrimidine, hence A plus G equals to T plus C. That means total number of nucleotides possessing adenine and guanine nitrogen base equals to the total number of nucleotides possessing thymine and cytosine nitrogen bases, right? Now what you can do is you can place this T plus G term in the denominator of A plus G. So what will come? 1 will come, right? So when you put T plus G in the denominator of A plus G, hence you can get this. What is this? A plus G divided by T plus C equals to 0. This is nothing. This is derived from this second step. The third step is derived from the second step only, where we have shifted this right hand portion part to the denominator of left hand portion part, right? बस इतना ही किया है हमने. So A plus G and T plus C, the ratio of A plus G यानी कि the ratio of purine and pyrimidine equals to 1, and this is a value constant for all the species, irrespective of the organism is belonging to which species. This ratio of purine divided by pyrimidine will always be 1, right? This is constant for all species, please remember. Next we need to understand is the base ratio. So you can get questions in your exam or in your test related to base ratios. Let us understand what is a base ratio. Base ratio means ratio of A plus T and G plus C. Remember A plus T and G plus C. तो क्या है A plus T and G plus C? Total number of adenine and thymine nitrogen bases in a DNA divided by total number of guanine and cytosine nitrogen bases in a DNA. This ratio holds a constant and a fixed value for individual species. तो ये रेशियो, बेस रेशियो जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. Base ratio is species specific. So this base ratio will be different for humans, will be different for
other mammals will be different for other animals as well, right? So with the help of base ratio, if you are given base ratio of different species, you can easily make out that this DNA molecule belongs to which species of organism. So remember, base ratio is species specific. Specific for species, that means it holds a specific value for individual species, right? I hope this much is clear to all of you. चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, और याद रखिएगा ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस है वो इरविन चारगॉफ ने दिए थे, जिनको बेस बनाकर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, राइट? आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू डीएनए विथ रिस्पेक्ट टू द डबल हेलिक्स मॉडल. तो देखो बच्चों, टू चेन्स ऑफ डीएनए, याद कीजिए डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. नाउ दीज टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर एक्चुअली कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन. इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, तो कॉइलिंग है राइट हैंडेड फैशन में. नेक्स्ट आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, पिच. एक हेलिक्स है, देखो यहाँ देखो, ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये देखो ये क्या है. इफ यू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अंडर अ माइक्रोस्कोप, you can see that DNA exists in a helical structure. So what is this? This is a helical structure of DNA. This is how DNA exists in a helix form, right? So helix, if we say helix actually has a pitch, right? It's a geometrical shape. So helix, so DNA is existing in this particular geometrical shape known as helix, and helix always has a pitch, right? So hence DNA which is existing in form or shape of helix should also have a pitch. So pitch of DNA is what? So pitch of DNA is 3.4 nanometer. What is 3.4 nanometer? Can anyone tell me what is 3.4 nanometer pitch of the helix? बताइए. Pitch of the helix means 1 turn, यानी कि DNA का जो एक टर्न है उसकी लेंथ, राइट? So this is the entire DNA molecule, right? DNA molecule is present in helix. इसका मतलब इस DNA के molecule में कई सारे turns होंगे. तो अगर DNA के helical structure की बात करें तो DNA helix में जो एक turn होता है, right? जो एक turn होता है, DNA आपको इस तरीके का नजर आ रहा है, right my students? तो इस DNA के इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग DNA के एक टर्न का लेंथ कैलकुलेट करें, सो द लेंथ ऑफ वन टर्न इज एक्चुअली नोन एज द पिच एंड इट इज 3.4 nanometer long. I hope this much is clear. Next, 10 base pairs are present in each turn, right? So अभी हमने यही बात करी, pitch कह लो या one turn कह लो, it is the same thing. So in one turn of DNA helix, there are 10 base pairs, 10 nitrogen base pairs present, right? And in this one turn, if we talk about the length, it is 3.4 nanometer. Next, distance between a base pair inside a helix of DNA is actually how much? 0.34 nanometer. तो ये जो दो है, right, यहाँ पे, तो distance between a base pair in a helix is actually 0.34 nanometer. तो ध्यान रखिएगा, राइट हैंडेड फैशन में कॉइलिंग है. पिच या टर्न की बात करें, वन टर्न या पिच की बात करें डीएनए हेलिक्स में, तो वो कितना है? 3.4 नैनोमीटर. और उसमें कितने बेस पेयर्स हैं? 10 बेस पेयर्स हैं. और डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर, राइट? सिंपल. आई होप आप सभी लोगों को ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी. चलो बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं. नेक्स्ट हमें क्या समझना है? यस, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है? द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर. ये यहाँ देखना, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अनदर. सो ये एक बेस पेयर का प्लेन है. ध्यान से इमेजिन करना. आई एम हेल्पिंग यू टू इमेजिन दिस लाइन गिवन इन एनसीईआरटी. सो दिस इज वन प्लेन ऑफ अ बेस पेयर, राइट? ये क्या है? नाइट्रोजन बेस पेयर है. प्यूरिन और पिरिमिडीन है, आपस में पेयर हो रखे हैं. दिस इज वन
बेस पेयर प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, और ये क्या है, वन बेस पेयर का प्लेन। तो ध्यान दीजिएगा माय लवली स्टूडेंट्स, ध्यान दो, ये एक बेस पेयर का प्लेन है, ये दूसरे बेस पेयर का प्लेन है। सो वन बेस पेयर, रिमेंबर दिस, सो एक बेस पेयर का प्लेन इज स्टैक्ड ओवर अनदर बेस पेयर। ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, इस तरीके से नहीं है, सो दे आर एक्चुअली स्टैक्ड लाइक दिस। सो व्हेन वन बेस पेयर प्लेन will be stacked like this, so what will happen, this will actually help in giving stability to the DNA structure. अब एक बार imagine करके देखिए, if the base pair plane are like this or this or this, what will happen, the electron density of this base pair will actually hinder or interact with the electron density of the base plane of the base pair that is present above it or below it. और इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे और उससे क्या होगा, उससे डीएनए का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, कैसा होता है, इनसाइड अ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वन प्लेन ऑफ वन बेस पेयर इज एक्चुअली स्टैक्ड ओवर ईच अदर एंड दिस helps in giving stability to DNA molecules. So these are the two important things. One is the hydrogen bonding between the nitrogen bases of the respected polynucleotide chain, यानी दो polynucleotide chain के nitrogen bases के बीच में जो hydrogen bonding हो रही है, एक तो वो, और second thing is the stacking of the base pairs, right? So stacking of the base pair plane on one over the another, and second thing, hydrogen bonds. These two factors provide stability to the DNA structure. The plane of one base pair stacks over the another in a double helix. This, in addition to hydrogen bonds, confers or provides stability to the helical structure. उम्मीद है students आप सभी लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये सब था किससे रिलेटेड, ऑल दिस डिस्कशन वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ रिस्पेक्ट टू डबल हेलिकल मॉडल गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। चलिए, अब दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ में मुझे डिस्कस करनी है। देखिएगा, ये जो फ्रांसिस क्रिक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो फ्रांसिस क्रिक है उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सेंट्रल डॉगमा को प्रपोज किया, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रल डॉगमा proposed by, according to this concept of central dogma given under molecular biology by Francis Crick, according to this concept, the flow of genetic information is how? So genetic information actually flows from DNA to RNA and then RNA to protein. यानी कि DNA के अंदर, DNA मॉलिक्यूल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर इन फॉर्म ऑफ द कोड्स, राइट? सो एक डीएनए के अंदर, एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पहले कॉपी की जाती है इन फॉर्म ऑफ आरएनए. सो कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, टॉकिंग अबाउट एमआरएनए जिसके ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. So when genetic information is copied from DNA to RNA, the process is known as transcription. And further on, from mRNA, when genetic information is copied or genetic information is transferred to protein, this process is known as translation. So this is the flow of genetic information that take place within a single cell. Yes, so from DNA, the genetic information is transferred to mRNA with the help of transcription process or via transcription process, and then genetic information from mRNA is carried on to proteins with the help of the process translation. तो ये flow होता है DNA से RNA, RNA से protein. क्या है ये? एक normal flow है genetic information flow करने का, और जिसे कहते हैं the concept is known as central dogma, right? इस सेंट्रल डॉगमा के कुछ एक्सेप्शन हैं, राइट? कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो रिवर्स होता है, और ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म का अब हम लोग डिस्कशन करते हैं. सो सी, some viruses the flow of the information is in reverse direction. How reverse direction? नॉर्मली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे करती है मेरे प्यारे बच्चों? नॉर्मली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है डीएनए से आरएनए, बट
कुछ वायरसेस ऐसे हैं, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए से डीएनए में कॉपी होती है। यानी ये वो वायरसेस हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं आरएनए है, राइट। और उन्हीं ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी, आरएनए से डीएनए बनेगा, right? I hope this much is clear to all of you that in reverse central dogma, according to the concept of reverse central dogma that is seen in some viruses, what will happen? Genetic information will flow from RNA to DNA with the help of the process known as reverse transcription and the enzyme reverse transcriptase. तो reverse transcription की मदद से कुछ viruses के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए से डीएनए की तरफ जाएगी. सो दैट्स ऑल अबाउट रिवर्स सेंट्रल डॉगमा. ओके स्टूडेंट्स, लेट मी कंक्लूड द सेशन. आज हम लोगों को यही सीखना था. फिर से बता देती हूँ आज हमने क्या सीखा. आज हमने इस लेक्चर के अंदर डीएनए का एक बेहद सिंपल लेकिन फेमस डबल हेलिकल मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था, उसे समझा. वो क्या है, किसने दिया और कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे देने में हेल्प करी या प्रपोज करने में हेल्प करी, उन सब की वर्क को समझा. देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लुक एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of the structure of DNA according to the double helix model of DNA. And in the end we understood the two important concepts, the central dogma and reverse central dogma, where we saw how the genetic information flow inside a cell. So that's all from today's session, students. Thank you very much for joining my class. Give me a thumbs up if you like me and my session, and do not forget to subscribe Infinity Learn by Shri Chaitanya. Thank you students. We'll meet again in the next session.